Republic Day is celebrated every year in India on January 26 to commemorate the date on which the Constitution of India came into effect. In the year 1950, and the country became a republic, India became independent on August 15, 1947, but it was not a date that India had chosen for itself. Rather, it was thrust upon by Lord Louis Mountbatten, as it marked the second anniversary of Japan's submission to Allied powers after World War II. India became independent from British Raj following the Indian independence movement. It did not have a constitution of its own. Indian laws were based on a modified version of the British Established Government of India Act 1935. 2 weeks later, a drafting committee with Dr. Babasaheb Ambedkar was appointed for drafting a permanent Indian constitution. Although the constitution was adopted on November 26, 1949, it came into force on January 26, 1950, a day chosen by Indians for themselves, for it held immense significance for the country. The significance of January 26 is that on that day in 1929, the Indian National Congress made the well-known declaration of Purna Swaraj, or complete self-rule, and Jawaharlal Nehru hoisted the three colours on the banks of River Ravi. The date set for independence was January 26, 1930, and was celebrated as Purna Swaraj Day for the next 17 years. Thus, when the Constitution of India was adopted on November 26, 1949, was considered it necessary to celebrate the document on a day associated with national pride, which was January 26. The Indian Republic Day is celebrated all across India with lots of patriotism and fervour. At Rajpath in Delhi, magnificent parades by regiments of the Indian Army, Navy, Air Force, Police and paramilitary forces are witnessed. Indian defence prowess is on display too, with the latest missiles, aircraft and weapon system. Beautiful tableaus representing the uniqueness of all the states of India are also showcased during the parade. The celebration usually ends with numerous air shows and flypast by the Indian forces. It is a day when every community comes together and celebrates living past all their differences. India is celebrating its 73rd Republic Day this year. Thank you. देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देने बाय थम, मैं नाम नारायण हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। My name is Nidhi. As we all know, Republic Day is celebrated on 26 January every year in India with great pride and enthusiasm. Before independence, India was under British rule for over 200 years. After long struggle and great sacrifice of many freedom fighters, India got independence on 15 August 1947. On 26 January 1915, India Constitution came into force. Hence, this day is very important for our citizens of India. Let's all show our respect and pride to the nation. मेरा भारत महान है। जय हिंद। Thank you. Good morning, madam and all my dear friends. My topic name is Republic Day. 26 January is a red letter day in the history of India. It is on this day that India became sovereign democratic republic. The Constitution of India was also declared on the same day. It means government for the people, by the people and of the people. Since that day, every year great celebrations are held all over the country. The main celebrations is held at New Delhi at the Rajpath. Ceremonial parades take place in the presence of President, of Prime Minister and various foreign dignitaries.
This is followed by the tableau of states which represent Indian culture and social heritage. Bravery awards are also given to the martyrs and brave heroes who dedicate their lives to protect the country. Rose petals are also showered by a colorful fly past of different airplanes of the Air Force. Similar functions are held in state capital all over the country. This day is a proud day for every citizen of India. Jai Hind. Thank you. Good morning, teacher. My name is Khan Rizwan Najim. My roll number 33. Good morning, teacher. My name is Khan Shizan Najim. My roll number 35. ये देश है वीर जवानों का, ये बेलों का मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सलवार टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सलवार टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी। हर कदम अपना करे है वतन तेरे लिए, आजा आजा जिंदू शामियान के तले, आजा गरीबा मेरे आसमान के तले। जग दे इंडिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम बने खुशी प्रदान, सत्य श्याम नाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। Jai Hind. Thank you. नमस्कार, मी रत्ना बंडीवडार, इयत्ता 9वी। आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। स्वतंत्र भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करत आहोत आणि त्याचा आनंद देखील साजरा करत आहोत। भारताच्या इतिहासाप्रमाणे आलेल्या प्रत्येक संकटाशी आपण भारतीयांनी खूप मोठा लढा दिला आहे। प्रत्येक लढाईत आपण विजय मिळवला। तशीच लढाई आजही आपण लढतो आहे आणि ती लढाई आहे कोरोना नावाच्या एका संकटाशी। संपूर्ण भारतीय व्यवस्थेचा कणा मोडून काढणारा असा हा महारोग, ज्याच्याशी आपण यशस्वीपणे लढा देतोय आणि ही लढाई आपण जिंकतही आलोय। पुन्हा एकदा भारतातील एकता दिसून आली। विविध जाती धर्माचे लोक या काळातही एकत्र आले आणि पुन्हा एकदा माणुसकी जिंकली। अशा या भारत देशाचा अभिमान मला आहे, ज्या देशात अनेक विषमता आणि समस्या असतानाही प्रत्येक संकटाच्या वेळी सर्व विषमता आणि सर्व समस्या विसरून एकजुटीने लढा दिला जातो। तो देश नक्कीच प्रगत आहे। भारतातील अनेक अनमोल माणसांनी भारताचे नाव अजरामर केले आहेच, पण कोरोना काळातील संकट काळातही अत्यंत धीराने आणि हुशारीने दिलेला लढा हा सर्व देशांना आदर्शवत आहे। म्हणूनच माझ्या भारत देशावर माझे प्रेम आणि अभिमान आहे। जय हिंद।
नमस्कार, मैं अनुष्का रविंद्र कांबळे आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें आज के दिन और संविधान के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आज हम यहाँ अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से महापुरुषों ने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारा देश 200 वर्षों के बाद अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया ताकि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के द्वारा शासन, यानी कि जनता खुद ही अपने नेता का चयन कर सकती है। यशस्वी भारत के इस गौरवशाली संविधान जिसका नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रखी गई थी, आज यही संविधान भारत की आत्मा है। या यूँ कहे कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। यूँ तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेकों धर्म, जाति, संप्रदायों, जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को हम भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। हमें गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहब द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व होता है हमें जब अनेकता में एकता के राष्ट्रीय गान का स्वर हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है। हमारा यह तिरंगा जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। अंत में मैं इन पंक्तियों के द्वारा अपने शब्दों को विराम देती हूँ। चलो देशभक्ति के गीत गाते हैं, आओ मिलकर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇಂದು ನಾವು 73ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತವು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 7 ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡತನ ನೀಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮತ್ತ ಬೆರಗಣ್ಣಂತೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕಾರಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆಚುಕ್ಕೆಗಳಂತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎದುರಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
आजा आजा हिंदुस्तानी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, चक दे इंडिया, ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला, रंगीला देश मेरा रंगीला। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। नदी कावेरी हरियुव भारत, नव कर्नाडु मेरे दिगे नोडुबा, जय जयवागलेंदु नाउ हाडुवा, जय जयवागलेंदु नाउ हाडुवा। भारतीय व्यवस्थेचा कणा मोडून काढणारा असा हा महारोग, ज्याच्याशी आपण यशस्वीपणे लढा देतोय आणि ही लढाई आपण जिंकत and two students and teachers we could see, and the last performance was excellent. The one तुझ पे दिल कुर्बान ऐ मेरे प्यारे। How many of us try to keep our classroom clean? Everyone stand, Sir. Just laugh, huh? Okay, start. See, now see everybody's face now, When I'm observing everybody sitting on this one, they are shivering. I also shivering. Okay? Come on, sit down. Thank you. Dear friends, very good morning to all of you. Today we are celebrating 73rd Republic Day. We gained independence from British rule on 15th August 1947. We had no constitution. Without constitution, country. And my dear children, all the events
that has started has to come to an end. And without proposing vote of thanks, it will be incomplete. Good morning everyone, myself Shraddha Murade from 11th Science would like to say a few words on Republic Day. Today's day is the 73rd Republic Day of our beloved country. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Republic Day. On 26 January 1950, our country got its constitution. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizens of the country holds the supreme power to elect their representatives. Constitution gives all of us the same right despite any difference of caste, creed or language. In the past 73 years, our country has gone through many changes. Along with lots of development, there are some pitfalls that have came into the way. Unemployment and corruption has grown up very fast. We should take a place to find a solution to this problem so that our country becomes the best place to live on earth. Thank you. इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस ले वो जब तक थी सांस ले वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पर धर कर माता सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब देश में थी दिवाली तब खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे कोली धन्य जवान वो अपने थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी कोई सिख कोई जाट मराठा कोई सिख कोई जाट मराठा कोई On what rests the hope of the Republic? One country, one language, one flag. These are the words of Alexander Henry. Today is a day where you and I, the citizens of this country, India, reaffirm our commitment to unity in diversity, to fraternity and equality among each other. Today is a day where the Constitution of our country, India, came into force in 1950. Today is also the day which reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters of our country gave their lives for the freedom of our country and gave us Purna Swaraj. Our ancestors gave us a glorious past. We need to create the future. So this Republic Day, let us together promise to lead the change and be a real Indian. Jai Hind.